जब भी नया साल आता है तो मगरिब की एक रिवायत है, लोग ईयरली अपनी रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि ये नया साल है, इस साल मैं ये करूँगा, इस साल मेरा ये अहद है अपने आप से और ये इम्प्रूवमेंट मैं अपने आप में लाऊंगा। अगर किसी चीज़ से जान छुड़ानी है तो बंदा सोचता है कि इस साल में ये काम करूँगा। कुछ किताबें पढ़नी है तो बंदा इंतज़ार करेगा कि इस साल में ये किताबें पढ़ूँगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, वो जब साल एंड होता है, जैसे अभी 2023 ख़त्म हुआ और 2024 की इब्तिदा हुई, तो वो एक बेस्ट ऐसे शाया करता है जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर मबनी होता है। तो इस साल जिस ऐसे का इंतखाब किया गया, उसके राइटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर रॉजर रोजनब्लैट। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और न्यूयॉर्क में रहते हैं। 80 साल इनकी उम्र है और 20 किताबें लिख चुके हैं। तो इनका जो न्यूयॉर्क टाइम का ओपिनियन पेज है, उस पे ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से ये बेस्ट ऐसे शाया हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि इसको मैं अपने चंद दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। इसका टाइटल है दिस ईयर मेक अ ग्लोबल रेजोल्यूशन। रॉजर रोजनब्लैट, प्रोफेसर डॉक्टर रॉजर रोजनब्लैट, ROSENBLATT। इब्तिदा में वो क्या लिखते हैं? न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन आर जस्ट लाइक प्रेयर्स। दुआ की मानद होते हैं। जो अब नया अहद करते हैं, दुआ की मानद होते हैं। दुआ कबूल भी हो सकती है, दुआ कबूल नहीं भी हो सकती। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर जस्ट लाइक प्रेयर्स। यू आर दिस वे बट यू होप टू बी दैट वे। आप यूं हैं, आपकी ख्वाहिश है जब साल एंड हो तो आप इस तरह बन चुके हो। यू यूज्ड टू वांट दिस, आपकी ख्वाहिश ये हुआ करती थी, बट नाउ यू वांट दैट। पहले आपकी ख्वाहिश हुआ करती थी ये मिल जाए, फिर आप इतने मैच्योर हुए कि ख्वाहिश हुई कि नहीं, ये इस काबिल नहीं है, मैं ये ख्वाहिश करता हूं। The assumption behind resolutions is that something must be corrected. जब आप अहद अपने आप से कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है, कोई कमी है जो आप पूरी करना चाहते हैं। And improved, corrected and improved. One vows to be better than one was the year before. न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बेसिक ख्वाहिश क्या होती है कि जो मैं 2023 में था, अब मैं 2024 में उससे बेहतर होऊंगा। प्रोफेसर रॉजर रोजनब्लैट बेस्ट ऐसे न्यूयॉर्क टाइम में फरमाते हैं, पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ रेजोल्यूशंस पर्टिकुलरली फॉर दोज ऑफ अस नॉर्थ ऑफ 60, यानी जो 60 के पेटे से आगे चले गए होते हैं, हैज टू डू नॉट ओनली विद द न्यू ईयर बिफोर अस बट ऑल्सो विद द टाइम ऑलरेडी स्पेंट और मिस स्पेंट। ख्वाहिशात जो भी आनी है, क्योंकि आगे आने वाला दिन कम रह गए हैं, जिंदगी कम रह गई है, फिर उसको कैसे स्पेंड करना है और फिर क्या सोचना है कि कैसे मिस स्पेंड होगी जो जिंदगी गुजर गई। We reflect on the years we have lived, on the past resolutions made and broken. Another New Year's Eve come and gone. Every time the ball drops, the heart sinks. You are running out of time, and time is what we value most. The historian and philosopher Louis Mumford believed that the clock, not the steam engine, was the principal machine of the industrial age
because time has a commanding relationship to the expenditure of human energy, and thus to any product itself. From the start, the essence of industry has been that things run on time. Time touches everything in life, even love. The fundamental things supply. Thus, there is always a melancholic despair and urgency when we shout, Happy New Year! There's sadness to it, he says. Will this new year, in fact, be any better than the last? We resolve that it will. वादा तो हमारा यही होता है कि ये 2024, 2023 से बेहतर हो. लेकिन अपने पे गौर कीजिए, क्या वाकई है सब मुमकिन है? We resolve that it will. We resolve to be fitter, healthier, cleverer, richer, more successful, more popular, more productive, better dressed, happier. And so restarts the whole vain, foolish, inevitably disappointing cycle. The trouble with all such self-oriented promises is that they deal in chicken feed. What does the great wide world care if you lose weight, or work out, or work harder, or quit drinking, or smoking? Quit smoking, or smoke 3 packets a day, work out daily, or let yourself go. It's your choice, your life, your little life. Meanwhile, the whole tortured, self-destructive, polarized, endangered, extraordinary world spins on. What if instead of planning out our exercise regimes, we focused our intentions on all that is undesirable in human activities? Wars, bigotry, brutality, the despoiling of earth, and sought to address it. What if instead of making a toast resolution, we made airtight commitments? In Leaves of Grass, look at, he's a literary man. In Leaves of Grass, Walt Whitman writes, "This is what we shall do: love the earth and sun and the animals. Despise riches, give alms to everyone who asks, stand up for the stupid and the crazy." Walt Whitman continues, "Re-examine all you have been told at school or church or in any book. Dismiss whatever insults you, your own soul and your own very flesh. And then your life will become a great poem." So there, if you're looking for a worthwhile resolution, Whitman is not a bad place to start. The task of improving the world may seem impossible, but it isn't. All it takes is the proper sequence of correct, discrete decisions. Decisions are just resolutions with teeth. An editor of mine told me a story from his childhood on his grandparents' farm in Iowa. The little boy, looking out over the acres and acres of corn, asked his grandfather, "How are we going to suck all this corn?" The grandfather said, "One row at a time." This too is how to improve the world, and we can start small. Personally, I vow, Rosenblatt writes, I will frequently visit a children's hospital and try to distract kids with stories. The funnier, the better. I vow that I will phone every lonely person I know, and there are plenty, at least twice a week, just to chat and make them feel part of the living world. I vow to give alms to everyone who asks and to those who don't.
and to stand up for the stupid and crazy. The stupider, the crazier, the better. I promise to keep an eye out for strays, cats, dogs, and people, and bring them safety and comfort. I vow to see every wrong as a menace, every wound an opportunity. What will you do right now, this week, this month, to make a better world? Stage a protest. Send a letter to a right a wrong, or to proffer friendship. A thoughtful, sympathetic letter to a friend in sorrow or distress is a powerful thing. Lend a hand. Offer a word of comfort or inspiration or support or love. Donate money. And most valuable of all, donate time. There are so many ways to move this world right within reach. The great, beautiful irony of all this, of course, is that selflessness is not the opposite of self-improvement. Selflessness is self-improvement, the most meaningful and lasting kind. Practice it. This is the last line. Practice it. And you may find that the new year is in fact a step up from the last. You may find that all at once you look and feel better than you would have after any moment dieting or exercising. Unburdened of ego, lighter on your feet. Say, haven't you lost weight? Practice it. And suddenly you will find that your little life has gotten big. Big life, grand life is like art. It is not done well unless the artist dreams expansively, ridiculously, and making a glorious Whitman-sized fool of himself or herself in seeking to enhance everything, cure every evil. Nothing less. At an event a couple of months ago, someone asked me, Roger Rosenbrand says in his last line, why I write something by the way I do. And I found myself blurting out, I write to save the world. It was laughable, preposterous, but true. Roger Rosenbrand says, this time make global resolution to make not only yourself better, but the world better. सिर्फ अपने पे ही तवज्जो ना कीजिए, अपने इर्द की दुनिया पर भी तवज्जो कीजिए, उसको भी बेहतर बनाइए, अपने आप को भी लिफ्ट कीजिए और आसपास रहने वाले प्यारों को भी लिफ्ट कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, और ये सबसे बड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा. खुदा हाफिज.